ओके, एक मदर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे कि अभी इस डिस्कशन में हमें पता चली है, वो खाना ही है, फूड ही है। 80 के दशक और उससे पहले वाले जो लोग हैं, अभी भी उनके शायद डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ भी मिला के, क्योंकि हमारे उस टाइम पे डाइट कुछ और थी। लेकिन 90 ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यही आई है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, अपना डेवलप नहीं हो पाया। और रीज़न हम सबको पता है, कहीं ना कहीं पे द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट और जंक फूड का एक बहुत बड़ा रीज़न है। पिछले कुछ टाइम में कुछ कंपनीज की सेल बढ़ी है 90 के दशक के बाद में, इसमें दो कंपनी
say some lines about my mother, Mrs. Monica Sharma. She helps me in every field and supports me. I would like to recite a short poem for her. When God created mothers as lovely as can be, He made one extra special and saved her just for me. At last, I would like to give her a card for Mother's Day. Happy Mother's Day. To wish a very happy Mother's Day to all beautiful mothers present here. Today, NFCI Mandi has organized a workshop on the auspicious occasion of Mother's Day. I would like to thank all the beautiful mothers who came here and graced this event. I hope you have enjoyed the workshop. आयोजन किया, इसमें बहुत ही अच्छा आयोजन था और हमने आज बहुत जल्दी से और बहुत पौष्टिक जो रेसिपी जो सिखाई वो सीखी